अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं महबूब जमाल रोगानी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पास्ट पेपर्स हल कर रहे हैं। 2020, 21, 22, 23 और आनवर्ड जितने भी पेपर्स हैं वो हम सॉल्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो मैथ्स का पोर्शन है आज वाला, ये पार्ट 2 है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो हल करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ इधर तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन मुश्किल हो वो कमेंट में पूछिए, मैं हल करूँगा। सारे वीडियोस के देखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आइंदा भी जितनी मैं पेपर्स में अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों को आ जाए, आप लोग इनसे इन्फॉर्म रहे और आप उनसे फ़ायदा हासिल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं सैम्पली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो कमेंट सेक्शन में वो ऑप्शन डालें, कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ हल करके शेयर करूँगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा से क्वेश्चन इसमें ईजी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर रूट अननोन इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, the smallest number of 5 digits beginning with 3 and ending with 5 is option C। ये भी easy है। How many numbers of 200 are divisible by 7 is equal to 14? Question number 24, the sum of 3 consecutive number is given. What is the difference between first and third number? Option C, 2. Question number 25, what number has to be added to each term of 3 raised to 5 to make the ratio 5 raised to 6? तो ऑप्शन बी 7 नंबर आपने ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 26, द रेशो ऑफ the ages of two students is 3:2. One is older than the other by 5 years. What is the age of the younger student? Option B, 10 years. Question number 27, the mean proportional of 0.25 and 0.05 is option B. Question number 28, the ratio of A's and B's salary is 9:4. If A's salary is increased by 15%, then his total salary became 5,175. What is the salary of B? Option A is the correct one, or is 2,000. How is 1/2% expressed as a decimal fraction? 0.005. Question number 30. In an examination, 65% of the total examinees passed if the number of failure is 420. The total number of examinees is 1200. Question number 31. 9% of 64 plus 32% of 90 is equal to option A, 34.65. Question number 32. In 1 kg mixture of sand and iron, 20% is iron. How much sand should be added so that proportion of iron becomes 10%? 1 kg और ऐड करना है। Question number 33. The mean of 100 items was found to be 30. If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is option C, 29.9. If the arithmetic mean of 6 number is 45, what is the total sum of these numbers? तो ये जो ऑप्शन है उसमें इसके आंसर नहीं है और आप हल कर सकते हैं। Question number 35. In a class of 52 students, the number of boys is 2 less than the number of girls. Average weight of the boys is 42 kg while the average weight of all students is 40 kg. Approximately what is the average weight of girls? So option A, 38 kg. Question number 36. The average of 7 consecutive number is 20. The largest of these number is, तो ये option B, 23 is the correct one. Question number 37. What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the length of 3 meter, 5 meter, 10 centimeter and 12 meter, 90 centimeter? So option A, 30 centimeter.
What is the least number to be added to 631 to make it a perfect square? तो 45 इसके साथ ऐड करना है. The age of Pakistanis is 74 years. The age of Pakistan is 74 years. If, question number 40, if the if A multiplied by B is equal to 2A plus 3B, then the value of 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 is. तो ये आप खुद सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करें. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बेल के आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू.